Brahma cha lokadipati sampati Katanjali andaviram ayachatta Santidha satta parajakha ajatika Dese tu dhammam anukampimam pajam. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddhang dhammang sanghang namassami. Okay, so this is the third day of our gathering, and give a reflection on there's one of the things I wanted to bring up for reflection today is just the perspective on practice, in that for the Thai forest tradition, for Ajahn Chah's way of teaching and training, that there's an emphasis on this bringing of mindfulness and clear comprehension into everything that one is doing, and developing a continuity of practice, whether one is sitting, walking, standing, or lying down. These are it's a very strong emphasis and theme. I can remember when I first went to stay with Ajahn Chah, and of course not knowing Thai, then hearing all the teachings and the instruction in the Thai language, and you start to hear words over and over that he's using, and one of the words or phrases that just kept coming up all the time was the word satipanya, which is mindfulness and wisdom. It's used in a particular way, and as a Thai idiom. So it's like using awareness and intelligence in all one's things. You see it, whether it's in the meditation itself, or whether it's in so like in sitting meditation itself, or whether it's a cultivation of walking meditation, or whether it's doing chores, or whether it's on alms round. This developing of a continuity of satipanya. And one of our teachers in our tradition, Ajahn Mundo, has last several years has been translating it as truth discerning awareness, which I think is it's a really good flavor to be. So like that turning attention or lifting up of truth discerning awareness into all the things that we're doing. So it's not just the okay, I'll get it together when it's my time for meditation, but it's more, how do I have a continuity of awareness and attention and clarity, so that when I do come to meditation, then everything settles very quickly, because you've cultivated this continuity of attention and awareness.
लुंगपुर ने हमें याद दिलाया कि आज तीसरा दिन है हमारे विवेचन का, साथ बैठ के धर्म चर्चा का। तो आप कहते हैं कि आज हम थाई फॉरेस्ट एडिशन में जिस तरह से उसका मुख्य आधार रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे, और अजान चाह किस तरह से साधना सिखाते थे। तो अधिकतर वो हमेशा सती और संपजन्य की बात कहते रहते थे कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं उसमें ये साथ जुड़ा होना चाहिए, चाहे हम बैठे हैं, चाहे वॉकिंग मेडिटेशन कर रहे हैं। तो सती संपजन्य पे बहुत महत्व दिया जाता था। तो आप बता रहे थे कि जब वो पहले अजान चाह को मोनेस्ट्री में रहने गए तो थाई भाषा नहीं जानते थे और प्रवचन सब थाई में होते थे, तो वो कुछ शब्द बार बार इस्तेमाल होते थे जो वो सुनते थे, जिसमें सती पन्या शब्द बहुत इस्तेमाल होता था। मतलब अवेयरनेस है, एक सजगता है और प्रज्ञा भी है साथ में। और वो सिर्फ बैठे हुए ध्यान करते समय नहीं, चाहे वॉकिंग मेडिटेशन कर रहे हों, चाहे आर्म्स राउंड पे हों, चाहे कुछ ऑफिस जो अपने क्रियाकलाप करते हुए मोनेस्ट्री के अंदर दूसरे काम करने हों, हर समय वो कहते थे कि सती पन्या हमेशा साथ रहनी चाहिए, टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ प्रैक्टिस। अगर हमें साधना की निरंतरता रखनी है तो सती पन्या सतत साथ रहनी चाहिए। तो आपने बताया कि अजान मुनिंदो ने जो ट्रांसलेशन किया है सती पन्या का, ट्रुथ डिसर्निंग अवेयरनेस, तो सत्य को प्रकाशित करने वाली सजगता। तो वो कह रहे हैं कि ये भी बहुत अच्छी एक समझ ट्रांसलेशन है, जिससे पूरा आयाम स्पष्ट होते हैं कि सत्य को प्रकाशित करने वाली अवेयरनेस, जो सजगता ऐसी हो कि सत्य को हम प्रकाशित कर सकें, सत्य को ठीक से डिसर्न कर सकें। और ये इस पर हर काम में, चाहे ध्यान का काम हो, चाहे सामान्य दूसरे काम मोनेस्ट्री के रखने के हों, चाहे ऑर्गेनाइजेशनल काम हो, हर समय हम इस सजगता के साथ रहें। तो और जब हम हमेशा इस सजगता के साथ रहते हैं तो जब ध्यान करने बैठते हैं तो हमको समय नहीं लगता ध्यान की शुरुआत करने में, क्योंकि हम पूरी तरह से तैयार हैं और बैठते ही हमारा ध्यान शुरू हो जाता है। Years ago, when Ajahn Chah went to England for his second, he went on to England on two occasions, to make two trips to England, and on his second trip, Ajahn Sumedho had been living and teaching in London. There was already starting to be people getting interested, both in terms of Dhamma as well as in terms of taking on training, monastic training. And one of them was now Ajahn Vajiro, who's the abbot of a new monastery in Portugal. And so when Ajahn Chah came to visit, then Ajahn Vajiro was an anagarika in white, keeping 8 precepts, beginning the training. And he'd only just recently arrived at the monastery. And so there's several months, and then after the meal, there was the meal cleanup, and Anagarika Philip was taking one of the bowls monk's bowls to wash, and Ajahn Chah came over and sat down next to him and started showing him how to look after the bowl, to wash the bowl, how to be mindful, how to care for it, how to look after it, and then also but make it into a practice and develop that continuity of awareness in that, just that cleaning up, caring for the requisites, and after he showed it all to him, and he there was somebody who was there who was able to translate, and Ajahn Chah sort of smiled and said, Ajahn Sumedho
teach you about Nibbana, I'll teach you how to look after a ball. Which is very sweet, but it's also quite. It gives a sense of because Ajahn Chah, of course, he talked about the goal. He led us all to the kind of and pointed us in the direction of the highest practices. But he didn't overlook those basic things of how to care for the things around us, how to take on our duties, how to live together in community, and all of those are aspects of Dhamma. Because it's one thing to sit in a meditation hall with your cushion and the air conditioning, and then be able to watch your breath and focus attention and be somewhat peaceful sometimes. but to really bring that practice and training into everything that one's doing, and of course that's what the Buddha was teaching in that sense of that's what the Mahasatipatthana. So then the Buddha is very categorical. This is a path that leads in one direction only, the cessation of all dukkha, to Nibbana. So that learning how to apply it, taking it from a theory and learning how to live it. Because I think that's something that Ajahn Chah, in particular the forest teachers in Thailand in general, place a large emphasis on. तो आपने एक इस बारे में दृष्टांत बताया कि कई वर्षों पहले जब अजान चाह दूसरी बार इंग्लैंड गए थे, तो उससे पहले अजान सुमेधो वहाँ कई वर्ष थे और लंदन में साधना सिखा रहे थे. लोग इंटरेस्ट भी हो रहा था और कुछ लोग भी बन रहे थे. तो उस समय एक वहाँ पे अनागारिका फिलिप, जो अब अजान वजीरो हैं, तो उस समय वो वहाँ पे नए आए थे. तो भोजन के बाद वो बाउल ले जाके उसको साफ़ कर रहे थे. तो अजान चाह उनके पास गए और वहाँ पे बैठ के उनको दिखाया कि कैसे बाउल की देखभाल करनी चाहिए, कैसे उसको धोना चाहिए और पूरी सजगता साथ ये करना चाहिए. तो जो कोई उनके साथ ट्रांसलेट कर रहे थे, वो थाई में बोल रहे थे, तो एक और सज्जन जो ट्रांसलेट कर रहे थे, उन्होंने उनको बताया कि वो बेसिक इस सब के बाद उन्होंने ये कहा कि अजान सुमेधो तो आपको निर्वाण के बारे में बताएंगे, मैं आपको बाउल कैसे धोते हैं ये सिखाया करूँगा. तो ऐसा नहीं था कि अजान चाह निर्वाण की और हायर ट्रेनिंग की बात नहीं करते थे, बट उनका एक आउटलुक था कि जो चीज़ें हम सीखते हैं वो सामान्य एक्टिविटीज़ में भी हमारी आनी चाहिए. कि हम एक कम्युनिटी में रह रहे हैं, आपस में कैसे रहते हैं, हमारे जो क्रियाकलाप हैं क्या वो सजगता से होते हैं कि नहीं होते. लुंगपुर कह रहे थे कि एक एयर कंडीशन हॉल में बैठ के क्वेश्चन पे ध्यान सांस को देखना बहुत आसान होता है और कभी शांति मिल जाती है, लेकिन वास्तविक प्रैक्टिस तो वो होगी जब हम जो कुछ भी कर रहे हैं सत्य संपजन्य, वो हमारे हर कायाकलाप में, हर एक्शन में वो मैनिफेस्ट हो, हर एक्शन में उसका प्रभाव दिखे. और भगवान ने सतिपट्ठान सूत्र में स्पष्ट कहा है कि किस तरह से हमको अपने सारे क्रियाकलापों में सती संपजन्य के जो माध्यम से सब क्रियाकलापों में हमारा सजगता जुड़नी चाहिए. और स्पष्ट कहा कि ये एक रास्ता है जो एक ही डायरेक्शन में जाता है, कि दुख मुक्ति की डायरेक्शन में जाता है, निर्वाण की डायरेक्शन में जाता है. और यही बात अजान चाह का बहुत एम्फेसिस करते थे, और सारे भी जो फॉरेस्ट ट्रेडिशन है उसके आचार्य इस बात को बहुत महत्व देते हैं कि हमारी साधना जो है हमारे दैनिक जीवन में इंटीग्रेट होती रहे.
again, one of the features of the practice in the forest tradition is walking meditation, and it forms such an integral part of our daily life and lifestyle, and just even how you, when you are building a monastery, that's for a forest monastery. Sometimes there'll be, you have a place to put up your little mosquito net or whatever, and that can be just about anywhere. But whenever you're going to practice in the forest, one of the things you're always looking for is there a flat spot for doing walking meditation, or if you're building the monastery, and so you build a kuti, a little cabin, enough of a shelter, and you build a walking path. And it's just is a part, so that on a daily basis, the meditation tends to be broken up between the sitting meditation, the walking meditation, depending on the temperament of the particular practitioner. Some people might do more walking meditation than sitting. Some people might do more sitting meditation than walking. But that walking meditation, it isn't just something, I'll stretch my legs so I can continue sitting. It's a cultivation of attention and mindfulness, and of course the emphasis is mindfulness as opposed to concentration. Because if you do walking meditation, concentrating, closing your eyes, and you end up running into trees or it just doesn't work. You've got to do it with your eyes open, but you're developing that sense of sense restraint and composure, and then a attention grounded in the movement and sensation of touch as one's walking. And so you've got a focus, but you've also got a broader awareness, and then you're paying attention to that, developing that continuity of focus, but then also you're recognizing what comes up in the mind, what distracting thoughts. Because sometimes what does happen, you move physically, and the mind starts to move more easily. So you're learning how to develop that say a solid base of awareness, so that there's a easeful attention on the posture, the sensations, the movement, the body, and reflected back on the mind. So that this is a very much a feature, and then sometimes certain monks will they walk very, very slowly, or and say, like when Ajahn Chah would give instruction for walking meditation, he would say, walk slower than your normal pace. So that you're trying to sort of slow things down, because once you do something normally, then all your normal habits kick in. So it's sort of, okay, just walk a bit slower. There's a bit of a pulling back, but then that helps to develop that awareness and continuity. And then there's a well-known exchange between, because Ajahn Chah would give this instruction, and then Jack Cornfield noticed he doesn't do it like that.
he tells us to walk slow, and then he walks really fast. And he asked Ajahn, you tell us to do it one way, and then you do it. Why is that? And Ajahn Chah said, well, for most people it's better to walk a bit more slowly. He said, but for myself, I do a lot of sitting and receiving visitors and talking, and so that I really like to move my body and have that. So it helps me to settle better. So so these are things that you have. You start with a template, but then you have to figure out, how do I use it? What works, or what works today and might not work tomorrow. And because if you just take, okay, I do it like this, and this is the way my mind works, and you got it all lined up. It's a really nice idea, but your mind is never going to do what you want it to. So you have to learn to recognize what are the distractions that the mind comes up with, and how do I learn from that, and how do I free my mind from those particular distractions with understanding. लुंगपुर ने आगे कहा कि हमारी साधना का एक महत्वपूर्ण अंग है वॉकिंग मेडिटेशन, चलते हुए ध्यान करना, और क्योंकि चलना हमारे डेली लाइफ का भी एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है। सामान्यतः हम काफ़ी चलना होता है दिन में, भिक्षु हो चाहे लेमैन हो। जैसे कि कोई फॉरेस्ट मोनेस्ट्री बना रहे हैं, बिल्डिंग बना रहे हैं, तो काफ़ी जब भी हम कोई जगह वहाँ के लिए चूज़ करते हैं तो ये ज़रूर देखते हैं कि कोई फ्लैट लैंड हो, सीधा लैंड हो, जहाँ पे कि हम वॉकिंग मेडिटेशन कर सकें। जंगल में भी जाते हैं, मॉस्किटो नेट रखाते हैं, वहाँ पे भी कोशिश यही रहती है कि पास में एक ऐसी जगह ज़रूर हो जहाँ पे कि वॉकिंग मेडिटेशन की जा सके। तो हर समय जब भी भिक्षु अलग अलग जगह पे जाते हैं तो वॉकिंग मेडिटेशन की एक स्थान बनाना भी उनका एक प्राथमिकता रहती है। कईयों को जो सिटिंग मेडिटेशन, वॉकिंग मेडिटेशन भी अल्टरनेटली पहले कुछ समय ऐसे करते सिटिंग की, कुछ समय वॉकिंग की। ये भी टेम्परामेंट पे डिपेंड करता है, स्थिति है, मन की क्या स्थिति है। कभी बैठना ठीक रहता है, कभी कम बैठना ठीक रहता है, कभी ज़्यादा वॉकिंग ठीक रहती है। तो ये कोई फिक्स्ड नियम नहीं है, जैसी परिस्थिति हो, जैसी मन की स्थिति हो। और वॉकिंग से मतलब सिर्फ इतना ही नहीं है कि हम बैठे हुए हैं, ज़रा टांग को खुला के थोड़ा लिया और फिर बैठ गए, तो मतलब है कि पूरी तरह से ठीक से वॉक करेंगे और आंखें खोल के ध्यान चलेंगे। तो आदत डालेंगे कि आंखें खोल के भी हम सजग रहें, क्योंकि आंखें बंद करके चलना तो खतरनाक हो सकता है। और जब हम चलते हैं तो उस समय हमारा ध्यान जो भी सेंसेशन पाँव में हो रही है या कहीं और टच की सेंसेशन हो रही है उसके ध्यान भी रखते हैं, लेकिन सजग रहते हैं, हर बार में चारों तरफ सजग रहते हैं। अभ्यास कोशिश यही रहती है कि हमारी अभ्यास की निरंतरता बनी रहे। और कई बार चलते हुए भी कई चीज़ें मन में उठती रहती हैं, मन के अंदर विचार उठते रहते हैं, तो उनके बारे में भी सजगता रहते हैं। शरीर में क्या हो रहा है उसके बारे में सजगता है, और मन जैसे इधर उधर जाने लगता है तो उसके बारे में भी सजगता रहते हैं। तो एक तरह से ये हमको सीखना है कि कैसे चला जाए ताकि हम हमारी सजगता बन जाए, शरीर की सेंसेशंस के प्रति क्या हो रहा है शरीर में, मन में क्या हो रहा है। कई भिक्षु लोग जो हैं धीरे धीरे चलते हैं। अजान चा भी कहा करते थे कि जब आप वॉकिंग मेडिटेशन करो तो जो सामान्य गति से आप चलते हैं उससे थोड़ा धीरे चलें, क्योंकि जब थोड़ा धीरे चलेंगे तो वो भिन्न हो जाता है। अगर हम सामान्य तरीके से ही चलते रहेंगे तो वही सामान्य परिस्थितियाँ आती रहती हैं, मन की वही इधर उधर भटकने की आदत सामने आ जाती है। लेकिन इसकी एक अच्छा दृष्टांत भी है इस बारे में कि वो अजान चा सबको सिखाते थे कि आप जो सामान्य गति से चलते हैं उससे थोड़ा धीरे चलिए। लेकिन वहाँ पे जब जैक कॉर्नफील्ड थे तो उन्होंने देखा कि अजान चा तो बहुत तेज़ चल रहे हैं, तो उनके पास गए कि आप हमको सिखाते हो धीरे चलो, खुद नहीं चलते हो, खुद तेज़ चलते हो।
तो उन्होंने कहा कि मैं क्योंकि बहुत समय बैठा रहता हूँ तो मुझे ठीक ज़्यादा तेज़ चलना मेरे लिए शुभ लाभकारी है। अधिकतर लोगों के लिए अच्छा है कि वो थोड़ा सामान्य सा धीरे चले, लेकिन ये नियम नहीं कि सबको वैसे ही चलना है। जो भी चले, जैसे कल भी बंते जी ने कहा था व्हाट वर्क्स, तो जो हमारे लिए उचित हो हमको इतनी विवेचना करने की आदत होनी चाहिए कि हम देख सकें। और कई बार ऐसे भी होता है कि आज हम अगर धीरे चल रहे हैं तो कल हो सकता है धीरे चलने से उचित ना हो उस समय। तो हमको ये सीखना पड़ेगा कि क्या हमारी मन की स्थिति है, कैसे डिस्ट्रैक्शन हो रहे हैं, और उसके हिसाब से ही अपनी साधना को अनुरूप, उसके अनुरूप ढालना होगा। There was a monk who came to train with Ajahn Chah, and he had heard Ajahn Chah's reputation, and he was kind of interested, and his background was one of he was actually a very accomplished meditator. He wasn't ordained for very long, but from the time that he first took ordination and first received meditation instructions, and it was actually very easy for him to enter deep states of samadhi and for the mind to go very, very still and focused, and he came and spent a little bit of time, and he found it a bit overwhelming to be at Ajahn Chah's monastery, so he was getting ready to leave, and Ajahn Chah just said to him, he said to him, well, you can go back to your cave and learn how to be peaceful there, or you can stay here and learn how to be peaceful anywhere. And of course that clicked with him, and he said one of the things that Ajahn Chah did was have him be his attendant and to help look after him. And so sometimes as an attendant, you've got to sit and wait and be alert to when the Ajahn needs something or when he wants something, and you actually have to pay attention. And he said, but he'd get bored of that, and then he start dropping it, and because he could go into samadhi very quickly, so his mind would start going to drop into samadhi, and then Ajahn Chah would say, come, bring me a spittoon, bring me a glass of and he couldn't ever go into samadhi. He was really very frustrated by that. But it was also, he knew he had to work with it, and so he's always been incredibly grateful to Ajahn Chah, because that sense of learning how to be peaceful anywhere is not a small thing, and what we usually want to do is just shut out, keep away the things that I don't like, don't want to bother with, don't want to deal with, and I can just be peaceful. But the world doesn't actually comply with our wishes, so that we really do have to, if we're sincere and we really want to be free from suffering, then we have to learn how to do that anywhere. And these tools of the Buddhas, the whole path of practice of Sila, Samadhi, Panya, these are
are all for the overcoming of dukkha. And so that learning how to implement it and integrate it into all the different aspects of our life is very important. And it's not easy, but it's to me it's really one of the only worthwhile things to be doing. बंदे जी ने एक और दृष्टांत बताया है। एक भिक्षु जो है वो बहुत अच्छे साधक थे, वो अकम्प्लिश्ड मेडिटेटर थे। तो उन्होंने अजान चाह के बारे में सुना था, उनकी ख्याति के बारे में सुना था, तो वो आके उनसे इंटरेस्टेड थे कि वहाँ आके रहें। और लेकिन वो कई बहुत लंबे समय से भिक्षु नहीं बने थे, लेकिन साधक बहुत अच्छे थे और बहुत जल्दी वो गहन समाधि में चले जाते थे, इतना उनका अभ्यास था। तो वहाँ पे आए, कुछ समय वहाँ पे रहे, तो उनको लगा कि ये स्थान मेरे लिए उपयुक्त नहीं है। तो कुछ समय बाद ही वो छोड़ के जाना चाहते थे, उनको लगा कि मुझे कहीं और जाना चाहिए। तो जब वो जाने लगे तो अजान चाह ने उनसे बुला के कहा, हाँ ठीक बात है, तो आप जा सकते हो, अपनी गुफा में चले जाओ और सीखो कि वहाँ गुफा में बैठ के कैसे शांति से रहा जा सकता है। या ये दूसरा है ऑप्शन है कि तुम यहाँ बैठ के रहो और ये सीखो कि हर परिस्थिति में कैसे शांति से रहा जा सकता है। तो ये बात उन भिक्षु जी को काफ़ी सटीक लगी और फिर वो वहीं पे रह गए। और बाद में वो बताते हैं कि जो उनको सबसे ज़्यादा जिस बात का लाभ हुआ वो था कि जब वो अजान चाह के अटेंडेंट थे, उनके ऊपर ठक बैठ के रहते थे, तो वो उनको निरंतरता से सजग रहना होता था कि कभी भी अजान कुछ कहेंगे कि ये कर दो, ऐसा कर दो, तो उनको तुरंत उसका रिस्पॉन्ड देना होता है। तो वो लेकिन काफ़ी समय तक कुछ काम नहीं होता था, तो बैठे बैठे बोर हो जाते थे। तो क्योंकि उनका अभ्यास बहुत था, तो धीरे धीरे उनका मन समाधि में लगने लगता था। और जैसे ही उनका मन गहन समाधि में जाने की कोशिश करता था, तो अजान चाह जागते और उनसे कहते, अच्छा ये ज़रा स्पीटून ले आओ, या ये काम कर दो, वो काम कर दो। तो इस कारण से वो गहन समाधि में कभी जा नहीं पाए, तो काफ़ी उससे फ्रस्ट्रेट हो जाते थे। और ये बात वो उन्होंने बताई कि उससे इस परिस्थिति से उनको बहुत लाभ हुआ, क्योंकि उन्होंने सीखा कि किस तरह से हम हर परिस्थिति में शांत रह सकते हैं और उसमें केवल एक सेक्लूजन में, अकेले में रहना से ही, जहाँ सामान्यतः हमको ये लगता है कि कोई ऐसी जगह चले जाएं जहाँ लोग हमें परेशान ना करें, हम अपना शांति से बैठें, ये एक विचारधारा हो सकती है। लेकिन हम समझते हैं कि संसार हमारी हर इच्छा को पूरी करने वाला नहीं है, हम कोशिश भी करेंगे तो भी ऐसा नहीं हो पाएगा। और जबकि भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है, उन्होंने हमको ऐसे टूल्स दिए हैं जिससे कि हम सीख सकें कि किस तरह हर परिस्थिति में हम शांति से रह सकते हैं, पीसफुल रह सकते हैं। जो 3 टूल हैं शील, समाधि, पन्या के, उनको हम इसी दृष्टि से देखते हैं कि हमको सिखाते हैं कि हर परिस्थिति में हम कैसे शांति से रह सकें और कैसे हम अपने सामान्य जीवन में साधना को जोड़ सकते हैं। और लुंग पोर कह रहे थे कि मेरी समझ से तो ये सचमुच में ये एक बहुत ही करणीय कार्य है। Open it up for questions. So I will first express our gratitude to Luang Por. आनंदमयं धम्मकथाया साधुकरं ददामासे। साधु 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 अनुमोदामि। तो अभी जो प्रश्न हो तो आप पूछिए। Reverend Bhante ji, there are 2 questions. One, in Thai tradition, do you advise the supportive meditations like Buddhanusati, Punyanusati, Marananusati, Ashambhanusati? That's one.
Second, how can we help our children to get established in teachings of Buddha and meditation? Are there any formal courses or meditation retreats for them? Yes, definitely teach and encourage these different supportive meditations. And also, sometimes people take those on as their primary meditation. So like the contemplation of the body could end up being a primary meditation, or the meditation of loving kindness, or maranasati, contemplation of death. These can end up being a primary meditation as well. A lot of it is like the idiom that I used last night in the instructions, or whatever works. And because those are just gaining skill in sort of saying, oh yeah, I've got options of how to work with the mind and my own human condition. So yes, there's many different meditations that can be lifted up and applied. For children, I think one of the best encouragements is the parent's example. They learn. Unfortunately, they learn from us a lot. So it really behooves parents to be very conscious. So when you, as you're a meditator or a practitioner, as you realize, yes, because they take you as you're the first teacher, and so that besides the responsibility of feeding and clothing and schooling and whatnot, it's those examples of a moral example, or a peaceful example, or a wise example. Those are examples that stick with children. So that's a very important one. The other aspect, in a more formal sense, in Thailand, oftentimes it tends to be structured, organized things are not a huge feature. It was like there's one of the monks in our tradition. His father is quite wealthy, successful. He was the only son, and was taking ordination, and the father was very disappointed, and said, I can't believe that a son of mine is just getting involved in organized religion. It was just, and the son said, oh, you don't have to worry about that, Dad. In Thailand, the religion, Buddhism, isn't organized. So it's, which is kind of flippant, but it's also in the sense that sometimes it depends on the monasteries, it depends on the teachers, it depends on, so that oftentimes you have to look around and see, so that say like Ajahn Kevali has done, hasn't done for a few years now, but would do a program of ordaining novices, and so that the village kids would come and stay in the monastery and practice, and
receive training in the monastery. And of course, there was just recently this. It wasn't for that true little monk. True little monk, yeah, we saw it. But it's something that does happen. But also in Thailand, one of the things is that the boundaries of the monastery are very permeable, in that I think especially for say myself or Westerners, the image of that comes up with when you say monastery is walls with big doors, and people don't come in, and that's really not how it works in Thailand. The monasteries are a fluid part of the society and the culture and life around it, and so that the monasteries, people's lives sort of move in and out of the monastery. As with the Buddhism is moving to the West, then places where it's beginning to be established, then this is something that people are missing, in the sense of, I've got this meditation practice, I've got these teachings now that I can, but what about my family? What about my children? And so say like at Amaravati, then there's in England, long-running family program that introduces and supports the family, the children of the people going there. In America, then one of our affiliated Buddhist groups, they've established a center. This is in Portland, Oregon, and they've established a center so that there's Dhamma teachings for people, and then there's a family program, so the children are introduced and have a way to make sense of what their parents are doing, so that I think it's something that say on a formal level, sometimes it happens, sometimes it doesn't, but oftentimes people say as a group come together and support each other and set something up. आपने प्रश्न पूछा था कि दो प्रश्न थे। पहला ये कि जो सामान्यतः समझा जाता है सपोर्टिव मेडिटेशंस हैं, जैसे बुद्धानुसति, धम्मानुसति वगैरह, ये थाई ट्रेडिशन की जाती है। दूसरा उनका प्रश्न था बच्चों के बारे में, धर्म की शिक्षा की ओर किया जाए। तो पहले प्रश्न के उत्तर में लुंगपो ने कहा कि हाँ, ये जिनको आप सपोर्टिव मेडिटेशन कह रहे हैं वो भी काफ़ी प्रचलित हैं, और कई बार जो भिक्षु लोग हैं उनको अपनी मुख्य मेडिटेशन भी बना लेते हैं, प्राइमरी मेडिटेशन बनाते हैं, जैसे कि काया का कंटेम्पलेशन, मैत्ता भावना या मरणानुसति, और जिनको सपोर्टिव कहा जाता है वो कई लोगों को उसको प्राइमरी मेडिटेशन बना सारा ध्यान की मन वही रखते हैं। जैसे कहने कहा कि जैसे मैंने कभी कहा, जो भी एक किसी के लिए उपयुक्त लगे वही करना चाहिए, और हमको ऐसी स्किल, ऐसी कुशलता लानी चाहिए कि हम समझें कि मेरे पास इतने ऑप्शन हैं, इतने चॉइस है, मैं इनमें से कौन सी मेरे लिए उपयुक्त हो वो सेलेक्ट करके अपने लिए इस्तेमाल करें। ऐसा एडवाइस दिया जाता है। जहाँ तक बच्चों के लिए वाला प्रश्न था, उन्होंने भंते जी ने कहा कि सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि बच्चों के लिए अपने माता पिता ही एक अच्छी एग्जाम्पल होते हैं। उन्होंने कहा दुर्भाग्य, ये शायद एक
हमारे को सजग करने के लिए कहा कि दुर्भाग्य से वो माता पिता से ही सब कुछ सीखते हैं, और इस कारण से माता पिता को बहुत कॉन्शियस रहना चाहिए कि हम कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्योंकि वही उनके पहले टीचर होते हैं। और हमारी माता पिता की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है बच्चों के लिए भोजन, कपड़ा, स्कूलिंग वगैरह का इंतज़ाम करें, लेकिन उसी तरह से एक एग्ज़ाम्पल ये भी महत्वपूर्ण उनके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक उनके सामने उदाहरण पेश करें, मॉरल एग्ज़ाम्पल रखें, एक शांत जीवन कैसे जिया जाता है, एक समझदारी से कैसे जिया जाता है, उसका उदाहरण भी अपने बच्चों के सामने रखें। ये बहुत महत्वपूर्ण है और इसी से ही बच्चे प्रेरित होते हैं। और जहाँ तक फॉर्मल सेंस में ये है, ऐसा ट्रेनिंग की बात है, तो बंदे जी ने बताया कि थाईलैंड में इस तरह के कोई स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइज्ड चीज़ें नहीं हैं। उसके दृष्टांत के रूप में उन्होंने बताया कि एक हमारे जो भिक्षु हैं हमारे ट्रेडिशन में, वो बहुत अमीर परिवार से हैं, बहुत सक्सेसफुल परिवार के अकेले बेटे थे। तो जब वो भिक्षु बने तो उनके माता पिताजी बहुत नाराज़ थे कि ये इस तरह के एक ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन में कैसे चले गए। तो उन्होंने भिक्षु जी ने अपने पिता को कहा कि आप चिंता नहीं करिए, थाईलैंड में बुद्धिज़्म ऑर्गेनाइज नहीं है। मतलब वो ये बताना चाहते थे कि काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी है सिस्टम में, और आप को पूरी छूट दी जाती है कि आप सेलेक्ट करिए कि क्या आप करना चाहते हैं। आपने उदाहरण दिया कि अजान केवली भी वहाँ के जो गांव के बच्चे हैं उनके लिए टेम्परेरी ऑर्डिनेशन करते हैं, फिर उनको मोनेस्ट्री में रखते हैं, और ताकि वो सारा जो हमारा ट्रेनिंग है भगवान की शिक्षा की वो पा सकें। और दृष्टांत उसका भी दिया जो अभी प्रोग्राम कुछ समय पहले हमने में यहाँ पे देखा था, कुछ समय ट्रू लिटिल मॉन्क का जो प्रोग्राम हुआ था, जिसमें भिक्षु लोग बच्चे लोग जो हैं 8 से 12 वर्ष के बच्चे मोनेस्ट्रीज में रहे, और फिर उससे उनके मेंटल कल्टीवेशन हुआ। तो सामान्यतः पश्चिम में लोगों को लगता है कि जो मोनेस्ट्री है उसका मतलब है कि बिल्कुल क्लोज्ड सर्किट, क्लोज अरेंजमेंट है, बड़ी ऊंची ऊंची दीवारें हैं, दरवाजे हैं जिसमें कोई नहीं जा सकता। लेकिन थाईलैंड में ऐसा नहीं है। थाईलैंड में जो मोनेस्ट्रीज हैं, जो विहार हैं, बौद्ध विहार हैं, वहाँ पे आवागमन बहुत रहता है। सामान्य जो गृहस्थ लोग हैं उनके साथ उनका बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन रहता है, और उनका आना जाना निरंतर बना रहता है, भिक्षुओं से संपर्क निरंतर बना रहता है। और पश्चिम में शायद अभी इस तरह की परिस्थिति नहीं हो पा रही, लेकिन फिर भी हमारी जो मोनेस्ट्रीज हैं, जैसे आपने उदाहरण दिया अमरावती का, वहाँ पे भी काफ़ी प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें कि फैमिली को आते हैं, बच्चे आते हैं और उनके साथ इंटरेक्ट करते हैं, और उनको इस तरह से धर्म के प्रति प्रेरित किया जाता है। अमेरिका में भी आपने कहा कि वहाँ पे भी उनके जो एफिलिएटेड एक बुद्धिस्ट ग्रुप है पोर्टलैंड में, वहाँ पे भी इस तरह की गतिविधियाँ होती हैं जिसमें बच्चों के लिए और परिवार के लिए धर्म देशनाएँ दी जाती हैं, उनको सिखाया जाता है। मुख्य वहाँ पे ये उसका उद्देश्य रहता है कि उनके माता पिता जो मोनेस्ट्री से जुड़े हुए हैं उनको पता चले कि वो क्या कर रहे हैं, ताकि वो भी समझें कि इसका क्या उपयोग है। तो कोशिश ये भी रहती है कि कुछ लोग जब इकट्ठे हो जाते हैं, कई लोग, तो वो एक फॉर्मल सेटअप बनाते हैं और फिर उनकी भी ट्रेनिंग दी जाती है। तो इस तरह से नाना प्रकार से परिवारों के साथ मोनेस्ट्रीज का इंटरेक्शन होता रहता है। Respected Luang Por sir, my question is related to the 5 khandhas. 5 khandhas. Even if we do not focus on all the khandhas together, does the cessation of all khandhas starts together? Yes, in the sense that, I mean, it's a useful tool to have, say, 5 khandhas. Literally, it sort of means heaps. So you got these 5 different heaps or categories of experience that you can pay attention, and you just by evoking, body or feeling or perception, and your attention goes to that. But there's
in the I think it's in the discourse of the Bhikkhuni Dhammadina, and she says these 5 khandhas are conjoined; they are not disjoined. And of course, the Buddha approves of that discourse, and it's in answer to questions. So that these 5 khandhas are you've got a name pointing to experience, but they're not separate. They are conjoined. They go together, and it's helpful to be helpful to separate in order for investigation. But it doesn't mean that you have some sort of pure consciousness or pure experience of body, or just pure memory. It doesn't work like that. They're conjoined. They're working together. They link to each other. But it's just lifting up for the purposes of investigation, so that you can start to see their impermanent, unsatisfactory, non-self nature. Okay. आपने प्रश्न पूछा था कि जो 5 खंड हैं, क्या अगर हम उन सब पे फोकस ना करें, एक पे ही करें, क्या उससे भी दुख निरोध की बात हो सकती है? तो बंते जी ने जवाब दिया कि हाँ, 5 खंड जो हैं हमको समझना चाहिए। एक 5 हीप है, एक तरह से 5 झुंड हैं, जो जैसे शरीर काया है, वेदना है, और जिनकी ओर हमारा ध्यान जाता है। तो आपने दृष्टांत दिया कि एक सूत्र है जिसमें भिक्खु धम्म देना एक प्रश्नों के उत्तर में कहती हैं कि 5 खंड जो हैं सब आपस में जुड़े हुए हैं, ये अलग अलग नहीं हैं, और भगवान बुद्ध उस बात को अनुमोदन करते हैं। तो ये एक खंडों की जो बात है, जो हमारे अनुभव होते हैं उनको नाम दिया गया ताकि हम उनको देख सके ठीक से। वो अलग अलग नहीं हैं, जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको अलग अलग देखना एक सहायक होता है हमारे इन्वेस्टिगेशन के लिए, विवेचना के लिए, जब उनको अलग अलग देखते हैं। क्योंकि हम ऐसा नहीं होता कि हमारा शुद्ध एक्सपीरियंस सिर्फ बॉडी का हो या सिर्फ वेदना का हो, वो सब जुड़े हुए हैं, सारे एक साथ काम करते हैं। और उसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम इनको उस तरह से देखें, उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकें, और हम अनात्म की तरफ बढ़ सकें। हम ये मैं नहीं, मेरा नहीं की बात जो है उसको ठीक से समझ सकें। My question is, I think there's a lot of gap. I feel there's a lot of gap in theory and practice for me. I understand the concept, I understand it on the mental level, but when it comes to actually living it practically, I lack equanimity, I lack patience, I lack tolerance. I mean, it's not there in real life. Yes. I mean, it's really, it's sort of like you think, oh wow, we'll build a building that we can have a Dhamma center in, and you can. How long does it take to think that? and then the actual building of it, and then once you build it, that isn't the end. You still have to look after it. So the practice is the same. I mean, the theory is. I mean, I can remember when I was first started to interested in meditation practice, and then I was staying in a monastery, and monks there said, "Well, why don't you ordain?" And I can't do that, because in my perception it was sort of like ordination means a lifetime, and from coming from a Christian background, Catholic background, and then the time said, "No, it's ordinary to just ordain for 3 or 4 months." And I said, "Yeah, 3 or 4 months, I could do that." Yeah, because I mean, how long does it take to
get enlightened. I mean, it didn't seem that difficult. And here I am, 45 years later. So that's I think that reality of knowing the difference between the theory and the practice is it brings in a certain realistic. That's where it really means a lot to have the supportive conditions, because on a theoretical level, you say that, how difficult is it? You just, you sit down, watch your breath, and your mind gets peaceful. So then you investigate, and then you let go of all your defilements. I mean, you can think that really easily. But the actual supportive conditions that it really requires in order to have the continuity and the patience and effort and all of these different qualities that are really required. Those supportive conditions are both internally and externally. That takes a lot of time to develop and then to balance that. So and that's the task for that discernment and reflect. Okay, how do I? I've all these balance, but you can't just sort of throw it in a pot and hope it's going to come out. You have to really reflect on how to use it. And sort of, as I was talking to Anish yesterday in the car, and saying, like Ajahn Chah saying, it doesn't take much to build a monastery, but to build a monk, who actually understands and is dedicated and then can actually be a good example for others. That takes a long time. Monastery, no time at all. When you think, God, it's like I built a few monasteries in my life, and that's a lot of work. But what is even more work is the people and ourselves. आपने प्रश्न पूछा कि मुझे लगता है कि जो हमारी थ्योरी है और जो मेरी प्रैक्टिस है उसमें बहुत भारी अंतर है, बहुत गैप है। थ्योरेटिकली मैं सब समझते हैं कि हमें समता में रहना चाहिए, हमें टॉलरेंस होनी चाहिए, पेशेंस होनी चाहिए, लेकिन साधना करने के बावजूद भी ऐसा लगता है कि हमारे सामान्य जीवन में ये नहीं हो रहा। तो बनते जी ने कहा कि हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। सोचने में कितनी देर लगती है कि ये सब ऐसा हो जाए, उसमें तो कोई समय नहीं लगता, लेकिन जो हम सोचते हैं उस बात को प्रैक्टिस में लाने में काफ़ी समय लगता है। तो जब उन्होंने अपना दृष्टांत भी दिया कि जब मैं साधना में इंटरेस्टेड हुआ तो एक मॉन्क ने कहा कि हाँ, तुम ऑर्डेन क्यों नहीं कर लेते, दीक्षा क्यों नहीं ले लेते, भिक्षु क्यों नहीं बन जाते। तो हमारे मन में, क्योंकि मैं एक कैथोलिक बैकग्राउंड से था, तो मन में एक परसेप्शन था, एक विचार था कि ऑर्डिनेशन का मतलब है कि सारे जीवन के लिए भिक्षु बनना पड़ेगा। तो इसलिए उसमें झिझक थी, लेकिन जब उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम 3-4 महीने के लिए भिक्षु बन जाओ, फिर देख लेना। तो बनते जी ने बताया कि मुझे लगा चलो 3-4 महीने में तो एनलाइटन हो ही जाएंगे, फिर बाकी जो करना होगा कर लेंगे। तो और फिर कह रहे हैं कि आप देखो 45 वर्ष हो गए, मैं यहीं हूँ अभी। तो वो एक जो आपने प्रश्नकर्ता ने बात की, उनका बिल्कुल एक रियलिस्टिक बात है। सचमुच में ऐसी बात होती है, ऐसा ही होता है, और उसके लिए हमारी कुछ उपयुक्त सपोर्टिंग कंडीशंस होनी बहुत है। सांस को कहना बड़ा आसान है कि बैठ जाओ, सांस को देखो, मन शांत हो जाएगा, फिर इन्वेस्टिगेट करो, फिर जो तृष्णा मालूम पड़ेगी उसको छोड़ दो, यू लेट गो ऑफ दैट। कहना बड़ा आसान है, करना काफ़ी मुश्किल है, और उसको करने के लिए तभी कहा जाता है कि सपोर्टिव कंडीशंस होनी चाहिए, वो तभी हो पाता है। और सपोर्टिव मतलब बाहर भी और अपने भीतर भी जो उसकी
उस साधना को आगे बढ़ाने के लिए जो सपोर्टिव कंडीशंस हैं वो हमारे अंदर होनी चाहिए। उसमें काफ़ी समय लगता है, और जो इन्वेस्टिगेशन का टाइम है उसमें काम है, उसमें काफ़ी समय लगता है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें मिला के किसी चीज़ बाउल में डाल दी और वो उठ के अपने आप हो जाएगा। हमें इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, तभी ये बात बनेगी। तो बंते जी ने फिर एक उदाहरण दिया कि कल हम जब जा रहे थे वहाँ नेशनल म्यूज़ियम, तो अनिश जी से बातें हो रही थी इस बारे में, तो उन्होंने एक दृष्टांत बताया अजान चाह का, कि उन्होंने कहा मोनेस्ट्री बनाना तो का बहुत काम है, लेकिन उतना काम नहीं है जितना कि एक मॉन्क को बनाना है। तो मोनेस्ट्री बनाने में ज़्यादा समय नहीं लगता, लेकिन मॉन्क को बनाने में तो बहुत लंबा समय लगता है। और बंते जी बता रहे थे कि मैंने भी कुछ मोनेस्ट्रीज़ बनाई हैं, लेकिन मॉन्क्स को की साधना को कल्टिवेट कराना सचमुच में बहुत कठिन काम है। ये लॉन्गपोर जी, मेरा प्रश्न भगवान की वाणी से संबंधित है। What was that again? He's saying in Hindi. I'll translate it. Ah, that's why I didn't understand. I didn't get that. तो भगवान बनते सोन को निर्देश देते हैं कि जो आप हमारी 5 इंद्रियां हैं, श्रद्धा, वीर्य इत्यादि, उनको उनकी परफेक्ट ट्यूनिंग करके अपने क्रम स्थान पे ध्यान लगाएं। तो वो उपमा देते हैं वीणा की, कि वीणा का तार ना ज़्यादा कसा है ना ज़्यादा ढीला है। इसी प्रकार हमारी जो 5 इंद्रियां हैं वो भी इन ट्यून होनी चाहिए, उसके बाद अपने क्रम स्थान पे ध्यान लगाएं। तो प्रश्न ये है कि ये हम कैसे जांचें कि ये हमारी 5 इंद्रियां संतुलित हैं, और नहीं है तो उनको कैसे करा जाए संतुलित। धन्यवाद। The question he's saying is that in the discourses there is an instance given of Venerable Sona, and the Buddha advises him that all the 5 indriyas, 5 faculties, Saddha, Vidya and all, they should be tuned properly, balanced properly. And the example is given of a musical instrument, which in sitar in India, for example, where the strings have to be properly tuned, neither too lax, neither too tight. And he says, how does one know really that these 5 faculties have been properly tuned? Well, I mean, it's similar to a musical instrument in that when you know, if it's too tight, then the sound is it's just, yeah, either the string breaks or the sound really doesn't resonate properly. If it's too loose, then the sound doesn't resonate properly. So there's that sense of a balance in that, okay, it's a pleasing sound. So similarly with the internal qualities, when the indriyas of Sanda, Virya, Sati, Samadhi, Panya, the faith, devotion, effort, energy, mindfulness, awareness, concentration, and wisdom, discernment, when those are balanced, then the sound that is produced is a sound, say, like an internal quality that's produced is a response of peace, of clarity, of well-being, and so that there's that's what comes out of the heart, or that's the result that is shown, so that there's there's an inner harmony and inner clarity, inner well-being that one experiences. Also asked, if one knows it's not balanced, what does one do? If he understands that things are not balanced, what does one do? Oh, you just keep doing it. Go back and do it again. That's where that quality of patience is so important. Because you can't get, I mean, obviously sometimes you do get frustrated or
start to have doubts and whatnot. But then he said, no, there's not a balance there. So that I've got to go back and figure this out and keep practicing and bringing some other, because that's where you take some aspect of those spiritual faculties, where, because sometimes there's that think, I'm just not being diligent enough. I'm not putting forth enough effort, and I don't know if anybody's read George Orwell's Animal Farm. Yeah, it's brought. I'll work harder. I will work harder. That's the horse. I will work harder, and he ends up dying. They just overwork. They work him to death, but the idea, I will work harder. I will work harder, and sometimes we approach meditation and practice like that, and it isn't what's needed. Then those qualities of say devotion or faith or confidence, and something that elicits that kind of devotion, or the faith, the heart of faith, like recollecting the Buddha, recollecting teachers. Or even just some visual. Like yesterday, we went to the National Museum. So just the thought of the relics of the Buddha, or some of these ancient images where that evoking, like some of the Buddha images that are there. Just really evoke a sense of peace. You can see the artist has really put their heart into it, and then others just don't grab us at all. And so there's just sort of there's something that evokes that sense of devotion or faith, and then that's what's needed. Or that's wisdom or discernment. But then you can end up where you get an insight into something by reflection and investigation or analysis, and then it starts to clarify. Other times you can just overthink something and just make yourself in a tangle. So it's a paying attention to these different qualities and where to put one's attention and effort and say, well, what's helping? What's working? And that's what that balance of these faculties is. It's that tuning, because you're tuning the faculties, but you have to tune your heart to those faculties. आपने प्रश्न सुन लिया होगा, हिंदी में था कि बनते सोने का 5 इंद्रियों को ट्यून करने को जो भगवान ने उपदेश दिया था, उसके बारे में था कि कैसे वो किया जाए। तो भंते जी ने उत्तर दिया कि ये जो इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियां, उनको भी सचमुच में एक जो म्यूज़िक की उदाहरण है बहुत उपयुक्त है, क्योंकि बहुत अगर किसी चीज़ कोई भी इंद्रिय ज़्यादा टाइट हो जाएगी, जैसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट में अगर ज़्यादा टाइट हो जाता है तो आवाज़ अच्छी नहीं आती, वो तार टूट भी सकता है, और हल्का रहे तो आवाज़ ही नहीं आती, और उसको जब हम बैलेंस करते हैं तो एक बहुत मधुर आवाज़ आती है। तो इसी तरह से जो 5 इंद्रियां हैं, श्रद्धा, वीर्य, सति, समाधि और प्रज्ञा, ये अगर बैलेंस हो तो हमारी अंदर के जो अंतर्मन में शांति का भाव रहता है और एक वेलबीइंग का भाव रहता है, चित्त बहुत प्रसन्न रहता है, तो एक अंदर से एक हार्मनी रहती है, अंतर में कोई बेचैनी नहीं होती, चैन से हम जीते हैं। तो अगर ये बैलेंस नहीं हो तो फिर परेशानी होती रहती है। तो जब पूछा कि ये कैसे बैलेंस लाएं, तो आपने कहा कि ये बार बार करते रहना पड़ेगा, क्योंकि इसके लिए हमको अभ्यास की आवश्यकता है। इसलिए भगवान ने कहा है कि
पेशेंस जो है बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। और होता है कि हम फ्रस्ट्रेट भी हो जाते हैं कि हमसे नहीं हो रहा, कभी ये ज़्यादा हो रहा है, कभी कोई कम हो रहा है, लेकिन कोशिश करते रहेंगे तो अपने आप धीरे धीरे सजगता से अगर हम जांच करते रहेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कुछ चीज़ें, कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी पांचों में से कौन सी इंद्रिय ज़रा हल्की पड़ रही है, कौन सी ज़्यादा हो रही है। जैसे आपने उदाहरण दिया कि मान लीजिए किसी को लगता है कि मैं बहुत डिलीजेंट नहीं हूँ, पूरा निरंतरता से साधना नहीं कर रहा हूँ, तो चलो मुझे एफर्ट कम है मेरा, तो वीर्य का जो इंद्रिय उसके ऊपर ज़्यादा जोर देता है, तो यही सोचता है कि मुझे और काम करना चाहिए। तो भगवान तो बंते जी ने उदाहरण दिया जो जॉर्ज ऑरवेल का प्रसिद्ध उपन्यास है एनिमल फार्म, उसमें जो कैरेक्टर होता है घोड़े का, वो हमेशा यही कहता है कि अच्छा मैं और काम करूँगा और काम करूँगा, और अंत में वो मर ही जाता है। तो बंते जी हमारा ध्यान उस ओर दिला रहे हैं कि अगर हमको लगता है कि वीर्य कम है तो वीर्य बढ़ाना चाहिए, लेकिन हम कई बार मेडिटेशन को भी इसी तरह से करते हैं जैसे उस घोड़े का मन था कि और में एफर्ट करेंगे तो उससे नुकसान भी होता है। जबकि दूसरी तरफ से उसके बैलेंसिंग के लिए जो डिवोशन है, जो श्रद्धा का बल है, वो बहुत महत्वपूर्ण इस तरह से रहता है कि भगवान की जो टीचिंग्स हैं उनको ऊपर चिंतन, उनको दोबारा याद करें। बुद्धानुस्मृति की जैसे बात ही कर रहे थे, और जैसे कल हम गए थे भगवान के रेलिक्स देखने नेशनल म्यूजियम में, तो उसको देख के श्रद्धा जागती है, उसके प्रति मन में भाव आता है, रिफ्लेक्ट करते हैं। तो वहाँ पे कई मूर्तियाँ भी थी पुरानी, तो उनमें से कुछ मूर्तियाँ इतनी अच्छी थी, उनको देखते ही मन शांत हो जाता है। तो इस तरह के जो सपोर्ट हैं वो भी हमको दे सकते हैं। इस तरह से बंते जी ने उदाहरण दिया पन्या का, जो विजडम की फैकल्टी हमारी है कि हम कई बार जब चिंतन ठीक से करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं, तो हमारे को कुछ अंतर्दृष्टि होती है, कुछ चीज़ बहुत स्पष्ट समझ आती है, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन कई बार अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा विचार भी करते रहें, सोचते ही रहेंगे, तो उससे दिक्कत होने लगती है। तो हमको इसका मार्ग यही है कि हम निरंतरता से पांचों क्वालिटीज़ की ओर ध्यान देते रहें कि कहाँ कमी है, कहाँ ज़्यादा खिंचाव हो रहा है, कहाँ ज़्यादा कमी हो रही है, और उसको बैलेंस करने का अभ्यास करते रहें। क्योंकि जितना अभ्यास करेंगे तभी हम धीरे धीरे उन पांचों को ट्यून करने की बात समझेंगे। तो उससे अपने अंतर्मन की क्या स्थिति है, हमारे चित्त की क्या स्थिति है, उससे हमको मालूम पड़ेगा कि जैसे ही वो शांत हो जाएगा, चैन में आ जाएगा, एक सेंस ऑफ वेलबींग आ जाएगी, शांति आ जाएगी, तो हम कह सकते हैं कि वो जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट अच्छी तरह बज रहा है, तो इसी तरह से हमारी साधना भी अच्छी तरह से हो रही है। Okay, let's have a short break and then come back for meditation. तो अभी थोड़ा विश्राम करेंगे कुछ समय और फिर ध्यान करेंगे।